राधे राधे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें। तो मैंने लास्ट टाइम जो बताया था, दैट इज़ लास्ट टाइम मैंने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। एंड व्हाट डज इट वी मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसके ऑल्टरनेट नेम होते हैं। सो माइक्रो एंड मैक्रो में बहुत ही वन लाइन का बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है विच आई विल एक्सप्लेन, और बहुत छोटे से में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से एक चीज़ है, बिकॉज हमको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज अ इंडिविजुअल लेवल, है ना। इंडिविजुअल लेवल पर उसके इकोनॉमिक एक्शंस, उसके बिहेवियर को समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, हम ओवरऑल लेवल के बारे में समझते हैं। तो एक एक लाइन की इसमें चीज़ है, दैट इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, विच इज जस्ट वन लाइन हियर, जिसमें हम बोलते हैं कि कैसे, हाउ, व्हाट वी से, दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, आई होप इट इज विजिबल, राइट। सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड है और मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड है। ठीक है, सो ही पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि माइक्रो जो है वो मैक्रो पे कैसे डिपेंड है। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रही हूँ, एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एग्रीगेट्स ऑफ पीपल। ये जो लॉ ऑफ डिमांड जो मैं एक्सप्लेन करूँगी एग्जैक्टली होता क्या है, इन सिंपल वर्ड्स आई वुड टेल यू, इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, कि विच मीन्स पूरे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, पूरे देश भर की डिमांड निकालने के लिए कि एक्चुअली लोग कमोडिटी के, जब कमोडिटी का प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो कितनी डिमांड लोगों की होगी। तो वो जो डिसीजन एट नेशनल लेवल पर डिसीजन, वो तभी तो आएगा। वो लॉ ऑफ डिमांड, कोई भी लॉ तभी तो निकलता है जब आप बहुत सारे ग्रुप्स लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करते हो, समझते हो। दैट्स हाउ वी डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड। तो वही है कि लॉ ऑफ डिमांड जो मैं इन डिटेलिंग, क्योंकि वो आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर है, उसको और डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। सो लॉ ऑफ डिमांड उसमें है। देन वी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट जो माइक्रो डिपेंड करता है मैक्रो पे, वो होगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड करती है कैसे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द कमोडिटी। आई विल एक्सप्लेन यू दिस टर्म, जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग, ठीक है, in the economy. Then we'll have law of demand. When I said it came into existence from the analysis of behavior of group of people, right? Behavior of aggregates of group of people. See, जो मैंने ये टर्म्स लिखे हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी टर्म्स और ज़्यादा क्लियर होंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर चैप्टर्स, एंड ऑल्सो दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई एम थिंकिंग टू ऑल्सो स्टार्ट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स साइमल्टेनियसली विद दिस माइक्रो। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है एंड इन्फ्लुएंस करता है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स, ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन नहीं करूँगी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन आई से, इतना तो समझ में आएगा कमोडिटी की प्राइस है, राइट, वो इन्फ्लुएंस होता है जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। प्राइस लेवल वो एक समझ में आएगा जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करूँगी, उसमें इन्फ्लेशन समझाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। देन आई हैव हाउ मैक्रो डिपेंड्स अपॉन माइक्रो। ठीक है, मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड है, मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड है। इफ़ यू नो दिस, से मैंने बताया मैक्रो लेवल पर हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम, राइट। सो नेशनल इनकम जो डिराइव होगी, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम है क्या, इट इज सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, राइट, यही तो होता है। उसके बाद नेक्स्ट भी है, ये नेशनल इनकम हो गया, एंड एग्रीगेट डिमांड। You remember, I explain your example of these things, aggregate demand. So again, aggregate demand is nothing but of course depends upon the demand of individual households of the economy, right? So what we have, macro depends upon micro through the national incomes. National income is nothing but of course the sum total of the incomes of the individual units
of the country. Aggregate demand, when I said, it depends upon the demands of the individual households of the economy, right? Next important terms, these are very few one line terms, because might be comes as an optional or for a knowledge basis, you should know about these things. Next we have second topic, micro and macro paradox. I think it is visible. Yeah, it is okay. Then we have micro, okay, let me take some different pen. Micro and macro paradoxes. Okay, okay. Next topic we have micro and macro paradoxes. What is paradox? You all have heard about these things, paradox. Actually paradox जो होता है, it's a very absurd or a contradictory statement. मतलब कि एक चीज़ टर्म से क्लियर हो रहा है, which is contradict, कि अपने आप में ही वो चीज़, जैसे for example if I would say I say I'll top the exam but I will not study, so these two things are contradictory to each other, right? So which are opposite to each other, right? So but it's a absurd or contradictory statement, though often it is a true statement. You understand? It's a fact. So what is paradox? Paradox is an absurd or a contradictory statement, but a true statement, or often a true statement, right? So what is paradox means by these terms? Paradox is absurd. I take a different pen. Absurd or contradictory statement, right? ऐसे ले आते हैं. Contradictory statement and true statement, often a true statement, right? ऐसे समझ में शायद ना आए, but I explain this thing with the help of an example. ठीक है? But now this paradox is micro and macro. Now if the paradox is in micro and macro activities, what does it mean? So it simply means any activity which is beneficial for an individual, right? Any activity which is beneficial for an individual but it may, so basically we'll have any activity which is beneficial for an individual but it may prove to be harmful for the economy, right? Harmful for the economy. ये पैराडॉक्स होगा माइक्रो एंड मैक्रो में. पैराडॉक्स कैसा होगा? कोई भी, मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल के लिए तो फ़ायदेमंद है लेकिन एज एन इकोनॉमी, लेकिन एक नेशनल लेवल पर, एक लार्ज लेवल पर वो हार्मफुल है. ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, रीड इट अगेन, आई एम सेइंग कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि इंडिविजुअल लेवल पर तो बेनिफिशियल है, उसको फ़ायदा कर रही है, लेकिन इकोनॉमी एक नेशनल लेवल पर, एक लार्ज लेवल पर, अगर हम उसे देखें मैक्रो लेवल पर जो है उसे नुकसान कर रही है. व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल फॉर दैट? एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ एन इंडिविजुअल सेफ, अगर मैं हूँ, अपनी फैमिली में आप हैं और आप अगर अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर आप सेव कर रहे हैं, इफ़ एन इंडिविजुअल सेफ, तो पूरी आपकी फैमिली बेनिफिटेड होगी एट एन इंडिविजुअल लेवल. आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से इफ एन individual saves from his income, right? Individual save from his income, तो क्या होगा? His family will be benefited, right? ये तो माइक्रो लेवल पर हुआ. ये सेम लाइन, एनी एक्टिविटी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल, क्या होगा? इफ़ एन इंडिविजुअल सेव्स हिज फैमिली विल बी बेनिफिटेड, राइट? अगर एक इंडिविजुअल सेव करता है अपनी इनकम से तो उसकी फैमिली को फ़ायदा होगा क्योंकि सेविंग्स इंक्रीज होंगी. बट इफ होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग्स, इट विल रिजल्ट इन द कंट्रैक्शन ऑफ आउटपुट, इनकम, डिमांड. द होल इकोनॉमी विल सफ़र विद दैट, करेक्ट? अगर पूरी इकोनॉमी में हर एक फैमिली सेव करना शुरू करे ऐसे तो पूरी नेशनल लेवल पर इकोनॉमी में क्या होगा? डिमांड ही नहीं होगी, आउटपुट ही नहीं आएगा, इनकम ही नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल लेवल इनकम तो कम हो जाएगी ना. इंडिविजुअल की बढ़ जाएगी लेकिन नेशनल लेवल की इनकम तो कम हो जाएगी ना. सो
पूरी इकोनॉमी इससे सफ़र करेगी. So they said, but it will result in contraction of demand, output, employment. I'm writing like that, okay? Employment, income, whole economy will suffer. क्या होगा? ये मैक्रो लेवल पर है, राइट? मैक्रो लेवल पर क्या होगा? whole economy will suffer, right? So this is a micro and macro paradox. What exactly paradox means? It means an absurd or a contradictory statements, though it is a true statements. So any activity which is beneficial for an individual, but it may prove to be harmful for the economy. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल लेवल पर तो उसको फायदा करिए माइक्रो लेवल पर, लेकिन लार्ज मैक्रो लेवल पर उसको नुकसान करेगी इकोनॉमी को. फॉर एग्जांपल एज आई सेड, मैं पैराडॉक्स इन माइक्रो और मैक्रो बता रही हूँ. पैराडॉक्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, राइट? सो ही सेइंग, इफ एग्जांपल, इफ एन इंडिविजुअल सेज हिज फैमिली विल बी बेनिफिटेड, सी फ्रॉम हिज इनकम माइक्रो लेवल पर है, बट यही नुकसान हो जाएगा, बट इट में विल रिजल्ट इन कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम. इफ होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग्स, होल इकोनॉमी विल सफर, right? If a whole economy starts saving with these things. So this is an example of micro and macro paradox. Can we have a third topic of these things? These are very small topics, and for knowledge sake, these are very important to understand, right? Now which one is more important? Now what do you think? I'm asking a question to you. Which one is more important? Micro? Now I'm asking to you, which one is more important? Micro or macro? क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना? दिस इज जस्ट फॉर अ नॉलेज सेक आई एम टेलिंग यू विच वन इज इम्पॉर्टेंट. सो सिंस माइक्रो जो है, एवरी माइक्रो एंड मैक्रो किसी को भी आके लेके चलो, इट हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन, राइट? नन ऑफ देम कैन बी डिस्पेंस विद दीस थिंग. हम नहीं कह सकते कि माइक्रो ज़्यादा, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन ले डाउन करता है. मैक्रो के मैक्रो लेवल पर अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल की हम बात करते हैं. सो माइक्रो इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स, राइट? एंड मैक्रो इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इकोनॉमी इन जनरल, राइट? So which one is important when I say micro or macro, right? So I said which one is important. So ये सिर्फ मैं एक theoretically explain कर देती हूँ कि since I know कि micro it have a place of their own, right? And micro and both micro and macro it have a place of their own. Micro जो है, none of them can be dispensed with. As I said, micro it concentrate on the working of an individual components. Macro जो है वो स्टडीज इकोनॉमी इज जनरल, राइट? वहीं पे मैक्रो फोकस करता है स्ट्रक्चर्स की, डिफरेंट ऑफ द एग्रीगेट्स, वाइल इट फोकस ऑन कम्प्लीटली एग्रीगेट देमसेल्फ. मैक्रोस पे फोकस करता है. सो वन थिंग, दे बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट? सो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, right? So the superiority of one approach of micro over the others, or macro over these micro, it cannot be claimed. Since both are supplementary and they are interdependent. Micro के बिना macro नहीं समझ सकते, macro जो है बिना micro के foundation के बिना नहीं चलेगा. So both are important at their own places, right? So if next question, as I said, these are very small topic, right? Why there is a need to have a separate theory of macro then? अगर ऐसा ही था, माइक्रो में ही समझ रहे थे, तो मैक्रो की ज़रूरत क्यों थी? Again the question answer lies here only. कि since micro it talks about the individual components, micro doesn't study the aggregate of the economy as a whole. So as a result, there was a need to have a separate theory which could explain the working of the economy, right? So macro it helps to understand the working of an economic system as well as to explain the various macroeconomic paradoxes. That's why it is very important to understand. So let's start with a completely new topic, that is the central problems of an economy.